Hello dear students, today we will discuss worksheet number 67 work and energy, kinetic energy. Jigyasa Didi, what is kinetic energy? Gyan, there are different form of energy in nature. An object possesses kinetic energy while it moves, so an object at rest doesn't possess kinetic energy. Example of object having kinetic energy: running water, moving bullet, rolling stone. यानी जो गति करते हुई वस्तु होगी वो ही kinetic energy उसके पास होगी. Kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion. The kinetic energy of an object depends upon mass of the object. More mass, more kinetic energy. Velocity of the object, more velocity, more kinetic energy. Mathematical expression of kinetic energy. Let us consider an object of mass m moving with a velocity u displaced to a displacement s. Let a force F be acting on it and produces an acceleration A to increase the velocity to V. Therefore, work done is equal to W is equal to F into S. From second law of motion, F is equal to ma. So, W is equal to ma into S. From third equation of motion, we have V square minus U square is equal to 2S. So, S is equal to V square minus U square upon 2A. Therefore, W is equal to ma into V square minus U square upon 2A, replacing S. W is equal to half m V square minus U square. If the object is at rest initially, then U is equal to 0, W is equal to half mv square. As the work done is equal to energy, therefore kinetic energy is equal to E is equal to half mv square. For an object at rest, U is equal to 0. Therefore, kinetic energy of an object at rest is 0. Examples देख लेते हैं कुछ. An object of mass 10 kg is moving with a velocity of 4 meter per second. Find out the kinetic energy it possesses while it moves. Mass of the object m is equal to 10 kg. Velocity v is equal to 4 meter per second. Kinetic energy is equal to half mv square. Half into 10 into 4 square is equal to 80 joule. Example second है, calculate the work to be done to increase the velocity of car from 30 km per hour to 60 km per hour. If the mass of the car is 1500 kg, mass of the car m is equal to 1500 kg, u 30 km per hour, u initial velocity है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे. इसके लिए 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से. ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड. और 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो द आंसर विल बी 15/3 मीटर पर सेकंड. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. W is equal to half 1500 multiply by 50/3 square minus 25/3 square. तो हमारा आंसर आ गया 1,56,250 joule. So let us discuss some question. Define kinetic energy. Also write its formula. Due to the motion of an object, the energy present in it is called kinetic energy. Its formula is half mv square. Question number 2. What would be the kinetic energy of a car parked in a garage? The kinetic energy of a car standing at rest will be 0 क्योंकि उसमें कोई movement नहीं है. Question 3. On what factor does the kinetic energy of an object depend? The kinetic energy depends on the mass of the object and velocity of the object. Question number 4. The kinetic energy of an object of mass m moving at 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when the velocity is doubled? तो velocity है 5 meter per second, mass m, kinetic energy 25 joule. तो फार्मूला क्या है kinetic energy का? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जूल. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जूल, है ना. तो और फिर हम इससे m निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, m आ जाएगा 25 इंटू 2/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 kg. तो हमारा मास कितना आ जाएगा? 2 kg आ जाएगा.
तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब डबल ले लेंगे ना, तो मास 2 kg है, तो काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला हाफ mv²। तो हम हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 आ जाएगा 100 जूल, यानी कि इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। Question number 5. Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. तो हमारे पास m है 20 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी u है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ m v² माइनस u², इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे हम। तो हाफ इंटू 2 इंटू 2² माइनस 5²। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू माइनस 21 आंसर आ जाता है। कार्य वर्क इज इक्वल टू जगह माइनस 210 जूल, यानी वर्क डन हुआ 210 जूल 210, लेकिन माइनस साइन बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हुआ। ठीक है, नेगेटिव वर्क हुआ।